So, hi everyone. Is it visible? Are we visible? Or is it a wrong side? The way setup is not good. Now, is everything good? Right, right. So, the chapter's name is Family. Health planning and management is the chapter's name, right? सो इसका क्या मतलब क्या होता है बेसिकली आप कोई भी प्रोग्राम बना रहे हो गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाते हैं ताकि उनके जो जनता है उनको वो प्रोग्राम्स का बेनिफिट्स मिल सके ठीक है तो ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ना ये हमें प्लानिंग किस तरीके से करना है ताकि एवरीथिंग गोज़ वेरी स्मूथली ठीक है ओके सो आगे बढ़ते हैं हम लोग तो So, planning and management are relatively new subject. Planning is for tomorrow और जो management होता है वो आज के लिए होता है. So these subjects have acquired great importance during the past 2 decades. मतलब पिछले 20 साल में प्लानिंग और मैनेजमेंट जो है ना एक बहुत इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंट हो गया क्यों हो गया द पर्पस ऑफ प्लानिंग प्लानिंग का पर्पस क्या है टू मैच द लिमिटेड रिसोर्सेज विथ मेनी प्रॉब्लम्स and to eliminate the wasteful expenditure or duplication of expenditure and to develop the best course of action to accomplish a defined objective. So, the increasing demand for medical and healthcare services in the face of limited resources has brought out the need for excuse me. Just excuse me for a second. I'll take some break. Let's see why is it not coming. Okay. So the increasing demand for medical and healthcare services in the face of limited resource has brought out the need for careful planning. Can I do this like this? Okay. The increasing demand for medical and healthcare services in the face of limited resources has brought out the need for careful planning and management of the health services. The planning and management are considered essential if higher standards of health and healthcare are to be achieved. ठीक है सो प्लान करना इज़ वेरी ज़रूरी क्योंकि पता है अगर आप किसी चीज़ को अच्छे से आप प्लान करते हो ना तो उससे फ़ायदा पता है क्या होता है द फ़ायदा इज़ कि वो चीज़ आप अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकोगे जैसे वी हैव आवर एग्ज़ाम 1 मंथ आफ्टर सो अगर उसको अच्छे से प्लान करके पढ़ना शुरू करेंगे ना तो वो तो पहली बात वो जो फियर रहता है वो सब भी चला जाएगा एंड द सेकेंड थिंग इज़ परफॉर्मेंस विल इंक्रीज़ तो इसलिए किसी भी चीज़ का प्लान करके मैनेज करना चाहे वो हमारा एग्ज़ाम हो चाहे कोई हेल्थ सर्विसेज हो हेल्थ का बड़ा बड़ा प्रोग्राम्स हो सब कुछ को प्लान करके एग्जीक्यूट करना इज़ द बेस्ट थिंग जो आप कर सकते हो ठीक है तो वही हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं तो प्लानिंग एंड मैनेजमेंट आर कंसिडर्ड एसेंशियल इफ हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ केयर आर टू बी अचीव्ड प्लानिंग इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस इंक्लूड्स 3 स्टेप प्लानिंग का ये 3 स्टेप होता है ठीक है क्या क्या होता है प्लान का पहले फॉर्मुलेशन फिर एग्जीक्यूशन एंड देन फिर एवेल्यूशन क्या फॉर्मुलेशन एग्जीक्यूशन एंड इवेल्युएशन ठीक है guys I can see your messages okay so let's go ahead
Sorry, some technical error was there. So, planning is a matter of teamwork and consultations. The planning team consists of not only specialists within the field but also specialized in other fields, whereas at economics, statistics, sociology, management, etc. Now, development and planning. So, what is it? Development planning. Every country has its own plan for national development. The purpose of national planning is to achieve a rapid, balanced economic and social development of the country as a whole. The national development plan of a country is the combination of sectorial plan which comprises of the following sector: food, agriculture, education, health, and family planning, industry, transport, communication. So, housing, power, social welfare, all these sectors compete for national resources. ठीक है? In this context, national development planning has been defined as continuous, systematic, coordinated planning for investment of the resource of a country, men, money, material in programs aimed at achieving the most rapid economic and social development possible. So, what is health planning? So, the health planning is a concept of recent origin. It is a part of national development planning. Health planning is necessary for economic utilization of material. इसमें बेसिकली हम लोग किस चीज़ के बारे में प्लान कर रहे हैं, हेल्थ के बारे में. सो यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल जो है वो किस तरीके से यूज़ होगा, मैन पावर कैसे यूज़ होगा, एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे यूज़ होगा. द पर्पस ऑफ हेल्थ प्लानिंग इज़ टू इम्प्रूव द हेल्थ सर्विसेज. ठीक है. So, in this context, national health planning has been defined as the orderly process of defining community health problem, identifying unmet needs, and surveying the resources. Establishing priority goals that are realistic and feasible and projective administrative action to accomplish the purpose of proposed program. है ना? So, health needs and demands. So, the purpose of health planning is to meet the health needs and demand of the people. Health need have been defined as deficiencies in health that call for preventive, curative, control, and eradicative measures. The need for medical care, safe water supply, adequate nutrition, immunization, family planning are all community health needs. It may be mentioned that the health needs are seen by the people are not exactly the same as seen by experts. Some needs may not be perceived at all, others vaguely perceived, and still others awaken only on contact with new way of life. People's need are conditioned by their aspiration. I'm so sorry, it's not very well visible, is it? I'm now finding it a very good solution, like for me to. Let me change the orientation. I'm not able to, do that. Ayo. Ayo. So the orientation has been changed. Now I can do it like this, right? It's all right? Is it? Everything's good? Okay. So let's go ahead. Take it. Okay. Make some changes. Okay. So good. Oops. Oops. I'm so sorry. So let's move ahead. So हम लोग कहाँ पे थे?
सो हेल्थ नीड एंड डिमांड्स जो होते हैं पब्लिक के, जैसे कि हेल्थ नीड्स एंड डिमांड्स क्या होते हैं, सो सबके नीड एंड डिमांड्स अलग अलग होते हैं। सो वो डिपेंड करता है कि नीड्स क्या है, कैसे परसीव करते हैं। सब नीड्स मे नॉट बी परसीव्ड एट ऑल, अदर्स वेगली perceived, and still others awaken only on contact with new ways of life. People's need and are conditioned by their aspirations. In a democratic society, people's need may be presented as demand. So resources के बारे में पढ़ते हैं. So the term resources is widely used in health planning. It implies the manpower, money, material, skill, knowledge, technique, and time needed or available for the performance or support of action directed towards a specified objective. The resource can be rapidly wasted if there is no proper planning and management. बेसिकली इसमें हम लोग को करना क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा जो रिसोर्स है उसका वेस्टेज कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका बेनिफिट्स ले पाएँ। मैनेज करने का यही होता है। हर एक इंसान को लाइफ में मैनेज करना इसलिए सीखना ज़रूरी होता है, बिकॉज़ वो यू नो क्योस को कम कर देते हैं अगर अच्छा से मैनेज करने का स्किल्स है तो ना। ऑब्जेक्टिव, टारगेट और गोल क्या है? A number of words are used to describe the end result of planning. Objective, target, goal. These words are drawn from military and sports terminology. An important element of planning is the setting of clear-cut objective, target, and goal. Let us consider the meaning of these words. इसीलिए पता है लाइफ में अगर कुछ अचीव करना है, जैसे कि पीजी करना है, तो एकदम जो ऑब्जेक्टिव है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मुझे पीजी निकालना है, तो बेसिकली कौन सा आपको एम्स निकालना है, जिपमर निकालना है या नीट निकालना है। सो मुझे एम्स निकालना है, तो उसके लिए मुझे आई एन आई सी टी के टाइप ऑफ पढ़ाई करना पड़ेगा। लाइक अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर है ना, तो आप उसकी तरफ पढ़ाई करोगे, उसकी तरफ अपना पाथ बनाओगे। सो ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। एंड ऑब्जेक्टिव यानी पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव पॉइंट इज प्रेसाइज, इट इज़ ईदर अचीव्ड और नॉट अचीव्ड, इट इज़ अ planned end point of all activities. A target often refers to a discrete activity such as the number of films collected or vasectomy done. It permits the concept of degree of achievement. Target are thus concerned with the factors involved in a problem, whereas objective are concerned directly with the problem itself. Like टारगेट मेरा होगा आज का बेसिकली ये चैप्टर कंप्लीट करना, बट मेरा गोल क्या है? मेरा गोल है कि कॉमेट का एग्ज़ाम क्लियर करना। समझे? टारगेट इज़ डे टू डे का क्या क्या मैं कर रही हूँ, जैसे वैसेक्टमीज, इतने वैसेक्टमीज कर लिए। बट ऑब्जेक्टिव होता है या तो किया या तो नहीं किया। ठीक है। सो गोल क्या होता है? गोल इज डिफाइंड एज द अल्टीमेट डिजायर स्टेट टूवर्ड्स which objectives and resources are directed. Unlike objective and target, goals are not considered by time or existing resource, nor are they necessarily attainable. Goals formulate the highest level of generally broad. A goal is usually described in the term of what is to be attained, the extent to which it is to be attained, the population or section of the environment involved, um, the geographical area in which it is proposed program will operate, and the length of the time required to attain the goal. So let's see कि plan क्या होता है. So planning results in the formulation of a plan A. A plan is a blueprint for taking action. It consists of five major elements: objective, policies, programs, schedule, and budgets.
A program is a sequence of activities designed to implement policies and accomplish objectives. A program gives a step by step approach to guide the action necessary to reach a predetermined goal. Program must be closely integrated with the objective. A schedule is a time sequence for the work to be done. Procedures are a set of rules for carrying out work which, when observed by all, helps to ensure that maximum use of the resource and efforts. Policies are being guided principles stated as expectations, not as a commandment. राइट ना प्री प्लानिंग क्या होता है सो प्री प्लानिंग इज प्रिपरेशन फॉर प्लानिंग प्लान करने के लिए जो प्रिपेयर करते हैं वो प्री प्लानिंग कहते हैं एंड इम्पॉर्टेंट प्री कंडीशंस आर गवर्नमेंट का इंटरेस्ट क्या है एनी प्लान फॉर द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ अ कंट्री मस्ट बी बेस्ड ऑन अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल एज मैनिफेस्टेड बाय क्लियर डायरेक्टिव or policy given by the political authority. Now, legislation, the social and health policies formulated may have to be translated into legislature. As an example, may be cited the element of medical termination of pregnancy act 1971 by the Indian Parliament to protect the health of mothers. Organization for planning. There should be an organizational structure for the preparation of the various parts of the plan. The Planning Commission in India serves this function. It is composed of full-time planners. प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो होते हैं उसमें फुल टाइम प्लानर्स हु आर एडवाइज्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स एंड टेक्निकल experts in the field of social and economic development as well as political leaders. Now, administrative capacity ये क्या होता है one of the essential precondition of planning is administrative capacity for proper coordination of activities and implementation of plans at all levels. For the health plan, administrative capacity is vested in the central and state ministry of health, right? Now let's see planning cycle क्या है उससे पहले let me see. Hi Shashank, I can see that you are studying so very well. So planning cycle देख लेते हैं planning cycle. आप देख सकते हो कि this is the planning cycle that we will be studying. So planning cycle क्या होता है ये planning थ्री टाइप का नहीं है formulate health problems then उसके बाद क्या करना है gather health data tabulate analyze interpret ये करना है then उसके बाद क्या करना है assign priorities among problem formulate individual priority problem for planning solution then define program objective and how to measure achievement then assign priorities among objective then design alternate program to solve problems right ठीक है देन वी हैव सेलेक्ट बेस्ट प्रोग्राम ये सेलेक्ट कैसे करते हैं यही करते हैं कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देख करके कॉस्ट इफ़ेक्टिव रेशियो देख करके वी सेलेक्ट कि कौन सा प्रोग्राम हमें चलाना है आगे कौन सा नहीं चलाना है बाय देखेंगे कितना कैसे फ़ायदा हो रहा है देन कंबाइन प्रोग्राम एंड डेवलप इंटीग्रेटेड प्लान then plan implementation of integrated program then orient and train personnel initiate integrated program then operate program collect data for evaluation then evaluate results goal achieved goal satisfactory yes तो ठीक है ऑपरेट करते रहो नो उसके बाद फिर से फॉर्मुलेट करो हेल्थ प्रॉब्लम क्या हो रहा है ठीक है इस तरीके से प्लान होता है इस तरीके से मैनेज होता है तो प्लानिंग साइकिल एक बार पढ़ लेते हैं
Okay, so planning is a broad foundation on which much of the management is based. Planning may be defined as process of analyzing a system or defining a problem, assessing the extent to which the problem exists as a need, formulating goals and objectives to alleviate or ameliorate these identified needs, examining and choosing from among alternative interventions strategies, now initiating for necessary action for its implementation and monitoring the system to ensure proper implementation of the plan and evaluate the result for interpretation of light of state objective planning. This involves succession of steps. These are shown in figure 1. Now analysis of the health situation. हेल्थ का क्या सिचुएशन है उसका एनालिसिस करने का। पहले एनालिसिस करेंगे, फिर स्टैब्लिश करेंगे ऑब्जेक्टिव एंड गोल, फिर असेसमेंट ऑफ द रिसोर्स, फिक्सिंग प्रायोरिटी, राइट अप ऑफ फॉर्मुलेटेड प्लान एंड प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन। उसके बाद हमारा मैनेजमेंट आएगा। ठीक है, वी जस्ट हैव टू रीड थोड़ा मोड़ा